हिसाब से काम कर रहे थे तो प्रशासनिक जोन भी उसी ढंग से काम कर सकते थे। तो दिल्ली की जनता से ये 150 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का अधिभार की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहां पर मैं ये भी कोट करना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने 2006 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिफॉर्म के लिए कमेटी बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट को उसका अध्यक्ष बनाया था। दिसंबर 2020 में उन्होंने लिखा that it was the biggest mistake of then government to break the municipal corporation which has led to the situation today. He said that his committee has recommended to the then union government, yani 2006 mein, and the Delhi government that MCD of the Delhi was not easily divisible and that its division could bring the multiple problems including the geographical challenges and the inequitable distribution of the resources. तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी सरकारों ने भी जो समितियां बनाई थी उनमें भी जो व्यावसायिक आपको सजेशन मिला था वो पूरी तरीके से आपने उसको नहीं माना, इसीलिए यह विभेदपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी तरफ इशारा किया गया कि एक नहीं अनेकों स्ट्राइक हुई। 2021 में म्युनिसिपल स्टाफ ने जो स्ट्राइक की उसमें 10 डिफरेंट ओकेजन पे लगभग 7 मिलियन वर्क आवर्स का लॉस हुआ और जनवरी 6 से 21 के बीच में 52,000 एम्प्लॉइज इन्वॉल्व हुए और 52,000 एम्प्लॉइज का इन्वॉल्व होना अभी तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक्स में से एक शुमार किया जाता है। दिसंबर 2020 में मेयर्स ने हंगर स्ट्राइक की मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के बाहर बैठकर। अक्टूबर 2019 में 260 टीचरों ने जाकर स्कूल के सामने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने प्रोटेस्ट किया। 2018 में अगर आप देखें तो सैनिटेशन वर्कर्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा। यह कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि किस प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया था और जो एमसीडी का ड्यू था वो नहीं मिल पा रहा था और स्ट्राइक लगातार हुई। जनवरी 2017 में, जनवरी 2016 में, जनवरी 2015 में, परंतु किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि जो पार्टियां थी वो तो, जो पार्टी दिल्ली में थी वो तो नई राजनीति की प्रतीक थी। उनका कहना था नई राजनीति है, तो वो नई राजनीति के प्रणेता थे, तो नई राजनीति पे वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। और उनकी नई राजनीति की जो पूरी कथा है 11 वर्ष की, हम ये नहीं कहना चाहते, एक ही पंक्ति में अगर कह दूं तो पहले कहते थे राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। फिर कहते थे सारी संसद और विधानसभा के लिए बड़ा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करते थे, असंसदीय होने के कारण मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं, वहां भी आ गए, उसके सिरमौर भी बन गए। शीला दीक्षित जी के लिए अभी हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी तो बोल रहे थे, पर वो भूल गए कि सारे ऑटो के बाहर 2013 में बेईमान जैसा शब्द लिखा हुआ। कहते थे हमारे पास तो सैकड़ों करोड़ की, सैकड़ों पन्नों की बुक है, और जब हम लोगों ने कहा कार्रवाई करो तो कहते सबूत ला के दीजिए। ये एक नई राजनीति थी। फिर कहा ना भाजपा समर्थन लेंगे ना कांग्रेस से लेंगे, फिर लिखित में समर्थन मांगा। फिर कहते थे जन लोकपाल लाएंगे, जन लोकपाल तो छोड़िए, अपनी पार्टी में एक लोकपाल थे उनके एडमिरल साहब, उनको भी समाप्त कर दिया। फिर कहते थे सीएम आवास नहीं लेंगे, वो भी लिया, सुरक्षा नहीं लेंगे, वो भी लिया। अब वो वैगन आर कार भी नजर नहीं आती है और चार्टर्ड प्लेन की भी आवश्यकता पड़ी, कोई बात नहीं। कहते थे नो वीआईपी कल्चर। याद करिए 2015 में 26 जनवरी का दिन, जिस दिन बराक ओबामा आए थे, उस दिन बाकायदा उनकी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जो वीआईपी सीट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इसका अर्थ यह हो गया। फिर इतना ही नहीं, बिहार में जाकर राजद और अन्य दलों के साथ वो खड़े हुए जाके, प्लीज प्लीज, हाँ जी बिल्कुल हो रही है मान्यवर, अरे इतना नहीं, सुनिए तो प्लीज प्लीज, बिल्कुल आप सुनाइएगा जनाब सुधांशु जी। अरे हमारे माननीय सदस्य प्लीज, नई राजनीति, अरे नई राजनीति के प्रणेता हमारे माननीय सदस्य लोग भी पार्टी ने जाकर उत्तर प्रदेश में सपा से भी गठबंधन करने का प्रयास किया। उनकी जो भी आपत्ति है मान्यवर बिल्कुल। ऑनरेबल मेंबर एड्रेस द चेयर को एड्रेस करें। माननीय सुधांशु जी एड्रेस को चेयर को एड्रेस करें। माननीय सभापति महोदय, ये मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो लोग कहते थे कि हम नई राजनीति लाएंगे, वो आकर कैसे 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 रूप बदलते हुए कहां तक पहुंच गए। तो ये अन्यथा न ले, तो इनके लिए कहना चाहता हूं एक बिंदु कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखो पर कमर बल खाई जाती है। तो ये बल खाते चले गए और ऐसा बल खाए कि इन्होंने एक नई राजनीति ये जरूर शुरू की कि पहले कहा एक दूसरे पे कि हम मानहानि का केस आरोप लगा देते थे, फिर माफी मांगते थे। हमारे नेता स्वर्गीय अरुण जेटली जी से भी माफी मांग चुके, नितिन गडकरी जी से भी माफी मांग चुके, औरों से भी किया। तो ये एक नई राजनीति जरूर है। ये मैं मानता हूं कि इन्होंने इस मामले में एक नई राजनीति का सूत्रपात करने में जरूर सफलता हासिल की। मगर मैं यह भी कहना चाहता हूं
जब बिल के विषय में ही बात हो रही थी, तो किस प्रकार का सरकार का संवेदनशील रवैया है। मैं ईमानदारी से पूछता हूं, यह बताइए, इनके मुख्यमंत्री महोदय शायद समकालीन भारतीय राजनीति के सबसे पढ़े लिखे आईआईटी ग्रेजुएट हैं, पर वो क्या कहते वैक्सीन का फार्मूला सबको बांट दो। अरे भाई, कोई चूरन है जो सबको बांट देना चाहिए? ऐसी अव्यवहारिक बात। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता और नेत्री और चाहे आम आदमी पार्टी के नेता, इन्होंने अप्रैल 2021 में कहा बच्चों का वैक्सीन बाहर भेज दिया गया। इतनी छलपूर्ण राजनीति। उस समय तो पूरी दुनिया में बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था और सब ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे कि बच्चों का वैक्सीन बाहर भेज दिया गया। ये इस बात का प्रमाण है। और फिर इस ढंग की अव्यवहारिक बात कहते हैं। प्लीज इस ढंग की अव्यवहारिक बात सुधांशु जी ऑन द बिल। हाँ, इस ढंग की अव्यवहारिक बात कहते सभापति महोदय। प्लीज कोई सामान्य व्यक्ति कहे तो बात समझ में आती है। संजय जी यूट्यूब पे डाल दो। प्लीज संजय जी, अब वो प्लीज संजय जी, सुधांशु जी, इस ढंग की जो फिल्मों को डालने की यूट्यूब पे बात कहते हैं, एक बहुत ही हल्की बात लगती है। अब सुनिए, अरे भाई आगे बात तो सुनिए प्लीज। सुधांशु जी एड्रेस द चेयर। अब मैं सभापति महोदय बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने जिस प्रकार की अव्यवस्था की, मैंने कोविड के दौर का क्यों जिक्र किया। हाई कोर्ट में लोग गए और हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि कोविड के दौरान जिस प्रकार की अव्यवस्था थी, मई 2021 का, मैं हाई कोर्ट का कोर्ट बता रहा हूं, जब उसने कहा कि व्हाट इज द यूज ऑफ मोहल्ला क्लिनिक, इट इज द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज इफ यू मेड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट्स द वर्थ इफ इट कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ डीलिंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक, जिसको ये सबसे बड़ा अपना महत्व मानते थे। फिर हाई कोर्ट ने दूसरी भी बात कही कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग मोर बेड्स व्हेन देयर आर नो सफिशिएंट डॉक्टर्स। ये दोनों टिप्पणियां हाई कोर्ट की इस बात के लिए प्रमाण है कि एक तरफ एमसीडी के डॉक्टर्स, एमसीडी के नर्स, एमसीडी का स्टाफ, एमसीडी के सफाई कर्मचारी कम वेतन मिलने की समस्याओं के बावजूद निरंतर उस दौर में काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो ये कर रहे थे उसमें इनकी जो वस्तुस्थिति थी साफ नजर आ रही थी। अब मैं कहना चाहता हूं, हमारे विरोधियों को चाहे लगेगा कि वो ये कह रहे हैं कि विषय के ऊपर, वन सेकंड, विच रूल, विषय के ऊपर डाइवर्ट होने की बात। 238 which point? 238 which one? A, B, C, D, E, which one? Sir, a member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending, make a personal charge against a member, use offensive expression about the conduct of proceeding of the House or any state legislature, reflect or any determination of the Council except on a motion for rescinding it, reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantiated motion drawn in paper terms. Expunged, sir. This We'll point examine. need to be expunged. अब मैं आगे बताना चाहता हूं, देखिए टिप्पणी सुनना भी कितना कठिन प्रतीत होता है सभापति महोदय। यह इस बात को दर्शाता है, कोई बात नहीं, देखिए ये किस बात को दर्शाता है सभापति महोदय। बिल पे आते। जी बिल्कुल, नहीं अब मैं इस विषय पे भी आ रहा हूं। सारे बिंदु मैंने बिंदुवार गिनाए हैं, ये डर को दर्शाता है। प्लीज सभापति महोदय, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने लिया। नाउ लेट्स लिसन प्लीज, आई हैव अलाउड योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज। सभापति महोदय, ये वो लोग कह रहे हैं जो कहते थे कि हम डर गए, और अब यदि कोर्ट की टिप्पणियों का विषय आए तो कौन डर रहा है यह साफ नजर आता है। मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि जब इस विषय के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्वयं यह बात बोली है, एमसीडी के संदर्भ में, प्लीज एमसीडी के संदर्भ में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि डर गए, इसलिए मैं इस विषय के संदर्भ में ही बोल रहा हूं क्योंकि डर का संदर्भ उनके द्वारा लाया गया है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं, हम डरेंगे जो 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब वहां श्रीनगर में गए, प्राण दे दिए, उस समय नहीं डरे। सन 66 में गोरक्षा आंदोलन में गोलियां चलाई इंदिरा जी की सरकार में, तब नहीं डरे। आपातकाल के भयंकर दुर्धर्ष दौर में हम नहीं डरे। वो फोर्स के समय में 400 की मेजॉरिटी लेके जब राजीव गांधी की सरकार थी, तब नहीं डरे। 92 में हमारी 3-3 सरकारें अकारण बर्खास्त कर दी गई, प्रतिबंध लगा दिए गए, तब हम नहीं डरे। जिस जमाने में झूठे केस लगाए गए हिंदू आतंकवाद के, तब नहीं डरे। श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बेवजह के केसेस लगाकर उनके ऊपर फंदे कसने का प्रयास किया गया, गृह मंत्री जी के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए गए, हम तब नहीं डरे। तो ये कह रहे हैं कि इनसे डरने की बात है। हम तो उस परंपरा के प्रतीक हैं जिसे मैं कहना चाहूंगा हम अकेले थे और आगे बढ़कर नहीं डरे, जिसे मैं कहना चाहूंगा कि अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे।
चिरवृत्ति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। मगर मैं यह बताना चाहता हूं, हमें डर नहीं है, हमें पीड़ा है। पीड़ा इस बात की है कि इस दिल्ली के अंदर एमसीडी के कर्मचारियों को उनका रिक्विजिट ड्यू नहीं मिले, उस बात की पीड़ा है। हमें पीड़ा इस बात की है कि यहां पर 20,000 कश्मीरी हिंदू रहते हैं और उनकी पीड़ा को लेकर एक खिलखिलाहट जब वहां सुनाई पड़ती है तो वो हमारे दिल में पीड़ा उत्पन्न करती है। हमारे दिल में यह पीड़ा यह होती है कि जो पार्टी सत्ता में है, एमसीडी में जिसके काउंसलर अनेक प्रकार के रिश्वत के आरोपों से भी हैं, अनेक प्रकार के आरोप लगे हैं। एमसीडी के ही इनके काउंसलर थे जिसके ऊपर दंगे में इतना बड़ा आरोप लगा था, जिनके की छत के ऊपर हथियारों का जखीरा निकला था, उसके लिए दिल में बड़ी मोहब्बत है। इनके नेता ने बोला था शाहीन बाग हमारे दिल में है, उनके लिए रहमत है। मौलवियों का भत्ता 10,000 से 18,000 होना चाहिए, उसके लिए दिल में रहमत है। उन्होंने कहा सहायकों का 10,000 होना चाहिए, उसके लिए रहमत है। अगर एमसीडी के लोगों को सैलरी देने के लिए दिल में हिकारत है। You're a senior member. सुधांशु जी कंक्लूड करें, आपका समय समाप्त होने जा रहा है। सभापति महोदय, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, उन सब के लिए दिल में रहमत है। और एमसीडी के सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, उनकी तनख्वाह देने के लिए आपके दिल में रहमत नहीं है, उनके लिए वो आप नहीं दे पा रहे हैं। अब मैं आपको अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, हकीकत में जानते हैं भय क्या है? ठीक है, किसी को थोड़ा विषयांतर लग सकता है, परंतु ये दिल्ली अब बदल रही है, और दिल्ली बदल रही है तो बदलने वालों को शायद वो बदलना स्वीकार नहीं हो रहा है। मैं यहां पर यदि पूछूं, इस दिल्ली में अंतिम भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान हुए थे। शायद हम में से भी बहुत कम लोगों को पूछा जाए पृथ्वीराज चौहान जी के पिता का नाम क्या था, शायद उंगलियों पर गिनने लायक लोगों को पता होगा। वैसे जो बिल प्रोड्यूस किया है तो माननीय गृह मंत्री जी को तो इसकी अच्छी जानकारी मुझे व्यक्तिगत चर्चा से भी पता है। मगर इसी दिल्ली में बैठकर हम में से किसी से पूछा जाए, चाहे वो दक्षिण भारत का क्यों ना हो, कि औरंगजेब के पिता का क्या नाम था, तो पूरी की पूरी वंशावली पता हो। दिल्ली की यह सोच अब बदल रही है। मेहरौली का जहां पर स्तंभ हमारा खड़ा हुआ है, बगल में कुतुब मीनार है, हमारी मेट्रोलॉजिकल एक्सीलेंस का प्रतीक दिल्ली में खड़ा है। उसको प्रतीक न मानकर किसी ऐसी चीज का प्रतीक जिसके बारे में जहां से कहा जाता आए थे पता नहीं, वहां तो कोई खंभा भी बना था कि नहीं कभी, ये पता नहीं है, परंतु उसको प्रतीक मानते हैं। यह भय है कि अब दिल्ली अपने वास्तविक स्वरूप में उभर कर सामने ना आने पाए। दिल्ली भारत का केंद्र है और भारत की चेतना का वह स्वरूप उभर कर ना सामने आने पाए, वह भय। इस भय के लिए मैं अंत में सिर्फ अटल जी की उस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं जिसमें दिल्ली का अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं बता रहा हूं, प्लीज आपका भय उसमें सामने आ जाएगा। उस पंक्ति उनकी मैं 4 पंक्तियां कहकर अपना विषय समाप्त करता हूं। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का करके सर्वनाश कब चाहा कर लूं निज विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। आपने शरणागतों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था सीए में। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। विश्वास नहीं यदि आता तो यह साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर में, हिंदू की जय तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। बस ये इनका असली भय है, परंतु वह भय इनका रहने दीजिए, हम विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू श्री जवाहर सरकार जी। श्री जवाहर सरकार जी। Thank you, sir. We have heard a lot of talk about rising above politics, but for the last half an hour, all I heard was the level of politics that would rather suit the Delhi Legislative Assembly more. I respect it more than this House. Be that as it may, sir, we have risen because we are duty-bound to stand up for federalism, for the spirit of federalism that holds this country together in spite of whatever some temporary occupants of power may think they have. This country has essentially survived on the spirit of heterogeneity. Do not go in for homogeneity, do not go in for trampling, do not go in for
one-way decisions. The very decision that you have taken or about to take or about asking us to endorse is one that speaks of control. My former speaker, Mr. Singhvi, has already mentioned about these things. In 2011, after several discussions, 3 bodies were trifurcated out of the Municipal Corporation of Delhi. Okay, you know that, I know that. Now, you say the Honorable Home Minister, who introduced the topic of not speaking on politics only, mentions that they have a revenue deficit. Fair enough. So if one has a revenue deficit of 2, the other has a revenue deficit of 3, the third has a revenue deficit of 4, if you add them together, you get -2, -3, -4, -9. Where do you get the positive from? Administration has been my occupation. So I would know that just the mere reunification of 3 disparate bodies that were split for an administrative reason does not confer ipso facto any virtue of revenue stability. That's my first point. The second, I would say, is it's a question of compactness of administration. Do I take this as a hint that you would not go in for splitting of unwieldy states? You would not go in for splitting of unwieldy administration? That you are back to control through large unwieldy bodies, unmanageable bodies? You can provide the answer. Talking of size, the Kolkata Municipal Corporation, the Mumbai Municipal Corporation are larger in size, but we have managed. We are managing. So don't bring in size there. The sum and substance of what I have understood is that you desire to postpone elections. That's all. Because once you go in for a step like this, it will go in for a delimitation, and that delimitation will take you 18 months. And therefore, effectively, you are bringing a municipal issue to a national issue, because exactly 2 years from today, we'll be facing a national consensus, a national referendum. So please do not drag, for the sake of retaining power, I would submit that we do not break down every institution that we have just for the retention of power. When we talk about it, I mentioned about one institution, the Director of Local Bodies. The present Act has a Director of Local Bodies as some sort of an overwatch. In the amendment, you are wiping out the post of Director of Local Bodies without explanation. Even on revenue, you have not provided an explanation, just a one-liner saying that revenue is deficit. So I would submit, sir, don't go in, even if you have to tamper with institutions, please go in for an explanation as to why you did away with it. Maybe you have some valid reasons, but we need to be more elaborate, more transparent. There is this talk that 272 seats would be compacted into 250. Section 3, subsection 5 mentions that the central government will decide the number of seats to be decided by the government of India. The overwhelming presence of a government of the central government in the Delhi Municipal Corporation Act is unbearably omnipresent. It's there everywhere. It does not speak. The spirit of local body is autonomy. Autonomy is spontaneity, is vibrancy of local decision making, not thrusting down from the top. This is what hurts us. This is what hurts us, and my party sincerely believes in it. Now, having spoken on the number of seats, as I said, it is not 250. Let's come out openly and said, tomorrow if the central government decides to make it 370, it can make it. You are keeping that empowering provisions. Sir, we are in 2022 when there has been so much talk of the scourge, the curse of scavenging and waste disposal. Not a single word. Oh, no, I will not say that. There's been one word on scavenging. That's all. Scavenging and waste disposal should have occupied, because this act, the spirit of this act would be copied in other parts of India. And you should have provided a model, even if you had political compulsion for going in for it. Nothing about scavenging, nothing about the curse of scavenging. You have provided for e-governance. E-governance, sir, will be happening anyway, whether you provide for it or not.
Now, when you merge all these bodies, what happens is you bring in different cadres. They're humans, they're families. When you bring them together, all this seniority and juniority and other things get in. Morale gets affected, motivations get affected. Don't, like when you are amalgamating banks, you don't know it will take you 10 years for issues to be sorted out. Honorable member mentioned about 12,000 crores. My account says that there is an 11,800 crore running deficit. That is what is required, a bailout package for whoever runs the government. It doesn't matter. It's for the citizens of Delhi, in spite of all the faults that it has. The total liability is 11,800 crores. When will the revenue, when will the package come? Is it tied to this pact? Is it tied to this deal? That is what we'd like to know. I repeat, we got up primarily because the Delhi Assembly was not consulted. My party sincerely believes in consultation with every elected body at every level. We may take their opinion or not, but we need to consult them. This sort of complete unilateralism, let me give you just a few examples because they strengthen what we have said. Even in COVID, an act that we had prepared, I was also part of the preparation once upon a time, the act, the NDMA Act, was brought in as if it was an enabling, it was a weapon that could be utilized for the totalization of power. That is not the correct attitude. The initial faltering that we made, the mistakes that we made as a nation arises from the mentality of control freak, as somebody put it. Even in COVID, there was no consultation at all when the lockout, when the lockdown was imposed. At every level, every step shows an arrogance, if I may put it, shows an uncaring attitude for the sensitivities of others, for regions, for states, as if just a pack of people running in Delhi, including bureaucrats, would determine the fate of every mohalla of Delhi. No, sir, this will not do. When the BSF rules were extended to all states, no consultation was made. That was another. Draconian laws and draconian regulations are sought to be expanded at the expense of at the contraction of the space available for the individual, for society, local government and state government. That is my submission. And that is my submission. Even the ED, the Enforcement Directorate and the CBI are regularly used to weaponize, to summon, to humiliate and to hegemonize over others. It's happening all the time. Now, even in Delhi, I would submit. Please conclude, honourable member. Amendment. Please conclude. I'll just half a minute. I'll wrap it up. The submission that I have felt as an outsider to this politics of Delhi is that this is only a ploy to postpone the elections, and that is dependent upon the prospects of their victory or not. Do not treat the national capital as just a trump card in your politics. I oppose the bill, sir. Thank you. Honorable Shri R.S. Bharti ji. Honorable Vice Chairman, sir, thank you for giving this opportunity. At the outset, on behalf of DMK, I want to oppose this bill, sir. This is undemocratic, as rightly pointed out by my previous speaker, Mr. Singhvi. He has rightly pointed out what are all the illegalities that this government is trying to do by unifying these three municipal corporations. I would like to ask the government, you apply one rule to Kashmir and Jammu and Kashmir, there you separate. You bifurcate. Here you are uniform. What is your policy? There, for your convenience, you gave so many explanations for bifurcation of Kashmir and Jammu. Here, you are giving lame excuse because you want to postpone the elections. Everybody knows that. What were you doing all these 5 years? You were in power. From 1940, 2014, you are sitting here. What prevented you from bringing this bill 2 years back? Why were you sleeping? Because of the Punjab result and the other states result, Uttar Pradesh also, you did not fare well. Therefore,
You have no confidence in your people. Therefore, you want, with an ulterior motive, the only motive is to postpone the elections. You say you want to increase the strength of the parliament members to 1,000. But whereas in this bill you say from 272 you want to bring it to 250. What is the logic, sir? So you want to create some lacunas in this bill and give room for people to go to the court and stay the bill such that elections will be postponed further. Therefore, I would request that the Honorable Home Minister said that stepmotherly treatment is done by the local government. Can I point out the central government and say that what is the central government doing? What applies to Gujarat should apply to Tamil Nadu also. What applies to Gujarat should apply to Kerala also. What applies to Gujarat should apply to West Bengal also. What applies to Telangana to Gujarat should apply to Telangana also. What applies to Gujarat should apply also to Andhra Pradesh. Sir, Tamil Nadu was suffering. Our Chief Minister appealed to you. Your team visited and saw the floods and the so many disasters that was caused to Tamil Nadu. But did you come forward to give the amount claimed by the state government of Tamil Nadu, sir? No. What you gave to Gujarat comparatively, you say. Therefore, this is not a valid reason. Because the state government is giving a stepmotherly treatment to one of the reasons stated by Home Minister is not acceptable. Therefore, I would request the Honorable Home Minister to withdraw this bill and conduct the elections to the local body at the earliest, because in democracy, and moreover, since I have been a municipal chairman for more than 2 decades, continuously 4 terms in Alandur, I know what is the difficulties the people will face once there is no municipalities. From the cradle to the grave, everything is to be taken care of by the local bodies. Local bodies should be given powers. But this government, central government, is trying to accept power after all the powers you want to take away from the states. Education you have taken. Now you want to take away the registration also. So state governments are going to become more or less a municipality, and municipalities are going to be still worse. So therefore, sir, I would urge upon the Honorable Home Minister to withdraw the bill and to pave way for early conduction of elections in Delhi, sir. Thank you. माननीय श्री प्रसन्नाचार्य जी. Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, many doubts are being raised about the constitutionality of the bill. Sir,